गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं तो अपना ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बट मैं अपना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भूल जाता हूँ कि ये वीडियोस अपलोड करना है और मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। तो मैं एक तो टीचर हूँ, मैं वेब टेक्नोलॉजी पे टीचर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी पे पढ़ाता हूँ। बट मैं मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मैं इतना बिजी रहता हूँ क्लासेस में, तो मैं वीडियोस बनाने के लिए मतलब अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है। सॉरी फॉर दैट। सो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे एक एक ही एग्जांपल में हाउ वी हैव इंक्लूडेड द इंटरनल इनलाइन एंड एक्सटर्नल सीएसएस। सो टुडे वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। सो सीएसएस में बहुत सारे सिलेक्टर्स है, मतलब मेनली तीन तरह के हैं सिलेक्टर्स। एक क्लास सिलेक्टर, एक आईडी सिलेक्टर, एक ग्रुपिंग सिलेक्टर। So we will see one by one through the videos. So let's focus on the class selector. So let me include the HTML tag. First, let me save it within the CSS folder. I'm giving the name as class underscore selector. Okay, selector.html. Fine. So this is the class selector, and then I include the head, title, and then give sorry, class selector. मैं टाइटल क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मेरे यहाँ पे बॉडी टैग है, मैं बॉडी टैग क्लोज कर रहा हूँ और मैं HTML क्लोज कर रहा हूँ। फाइन। So let me put it in proper indentation. So this is the okay. Fine. So I have the head, title, and then body. Let's save it. So let me include some paragraph tag. Okay. So paragraph tag. This is my paragraph in body tag. फाइन। तो ये मेरा पहला पैराग्राफ टैग हो गया बॉडी के अंदर। तो और ये HTML टैग है, इसके अंदर हेड है, टाइटल है, बॉडी है और HTML है। तो बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है। तो इतना तो आप लोग जान ही चुके होंगे कैसे एक पैराग्राफ टैग इंक्लूड करते हैं। तो पहले चलते हैं, पहले इसको रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने इसको नोटपैड प्लस प्लस से रन किया, दैट इज द स्टेप्स आर यू हैव टू क्लिक ऑन रन एंड लॉन्च इन क्रोम। तो ये यहाँ पे एक पैराग्राफ शो कर रहा है, दैट इज माय पैराग्राफ इन बॉडी टाइप। तो अभी हम लोग का टारगेट क्या है कि क्लास सेलेक्टर ऐड करना है। तो वी कैन यूज द क्लास सेलेक्टर इन बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, दैट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके। So let me show you how we can, first let me show you how we can include the internal CSS. So in internal CSS, I need to include the style tag. Oops. Okay. I need to include the style tag, and then I need to close the style tag. So here, since it's a class selector, so class, let me comment for you all guys. Okay, so all my viewers, so that all my viewers can understand, and that's pretty good if you are giving some comments in your code. So later on you can also go through the codes and understand. So class selector will use for like by specifying some class, like by the term class selector means we'll use some class, use any class. Fine. So for that I need to use the class attribute. Okay. Fine. So in class selector I have to use some I have to use any class. So you can see here this is my p tag. Okay, so this is my p tag. Using the p tag I have an attribute class, and then I'll give some name, suppose para1, and then I'll close the it's already closed, let me close it properly. Okay, so I have a paragraph, I have a HTML paragraph tag. ओके, आई रिपीट, ये एक HTML पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ क्लास,
क्लास के अंदर मैंने एक वैल्यू लिया है। अब मैं इस वैल्यू को स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो अभी मेरा क्लास है पैरा 1, तो उसको पैरा 1 लिखूंगा। और आप लोग देख ही चुके होंगे कि यू मस्ट हैव सीन दैट in the style tag I'm using the dot. So for class selector we will use the dot symbol. Class selector I use the dot symbol. Okay, fine. I guess this thing is clear to everyone. Okay, so for class selector I'll be using the dot symbol. So this is my class. This is the class where value of the class attribute is para1. So now in para1 I'll include some properties. So in para1 let me include, suppose, background hyphen color yellow. Fine. So now I have a background color of yellow. Okay. So in this paragraph will have a background color. This paragraph will have a background color yellow. So let me save it, and I'll go to the browser and then F5. So you can see here I have a so you can see here मैंने जो paragraph tag दिया था para1, तो इसका background color है background yellow. So like this I can include some class selector. So specifically class selector is used to give more effects to any tag. Suppose you have 10 tags, say 10 paragraph tags, and you need to give same color to those paragraph tags. So at that time I can use the class selector. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सोचिए मुझे मेरे पास 10 पैराग्राफ टैग्स है और उस 10 पैराग्राफ टैग्स को मुझे सेम इफेक्ट देना है, तब मैं क्लास सेलेक्टर यूज कर सकता हूँ। एक ही क्लास मैंने डिफाइन कर दिया और उसको मैं एक इफेक्ट दे दिया। बट आईडी सेलेक्टर मैंने जो इनिशियली वीडियोस में बोला था कि आईडी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, वन ऑफ द सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर में क्या होगा, स्पेसिफिकली अगर सोचिए 10 पैराग्राफ टैग्स है, 10 पैराग्राफ टैग्स को मुझे इफेक्ट देना है, तो तब हम लोग आईडी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। So fine, this is the class selector. Now I can include other things also, so other properties. Suppose text align, center. Okay, I'll save it. I'll go to the browser. Shortcut is Alt Tab and then F5. So you can see here you have a background color and you have the text align center. Now I can include color. Color suppose green. Okay, save it. Go to the browser. F5. So you can see here this is in green color. Fine. So like this I can give some effects. Now this is by using internal CSS. This is by using internal CSS, right? So this is by using internal CSS. Now if I want to do the same thing by external CSS, that is also possible. So right now this is the internal CSS. Now let me include one more. Suppose what I can say. Let me include the heading tag. Yes, fine. Let me include the heading tag. So I'll include h1. This is my paragraph. Fine. I close the h1, and then let me use some class. So head1. Fine. So now for this I'll have a external CSS. So here I need to write link the way I have written, right? Here you can see in the previous videos, the video that I have shown you, like the link, right? So same thing I'll use here. So you can see here the link rel style sheet. Okay, link rel style sheet and href is also some name. Suppose I can use class selector dot css. Fine.
Okay, so let me copy this part because I need to create this file also. So okay, so link rel style sheet. I have this file, the same thing that we have seen. Now I think this one is clear, I guess. We have done this previously also, the external css, same thing will be doing. मैं जैसे पहले previous video में external css use किया था, वैसे ही मैं external css use कर रहा हूँ using class selector. तो अभी मैं और एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, उसको पहले सेव कर लेता हूँ. फॉर दैट सेव एज, और मैंने इसको नाम दे दिया क्लास सिलेक्टर डॉट css. फाइन. अब यहाँ पे मैं जो मैंने क्लास यूज किया था head1 yes, I need to use dot because it's a class selector, so I need to use a dot symbol, and then within the head1 I will have some effect, suppose text align center. Fine, save it. Now I'll go to the browser and then F5. So you can see here previously uh, we have only a paragraph. Now if I remove this class selector, no, this is a normal heading tag, it should come in the left side. अब मैं ये class selector हटा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो. तो एक normal heading tags होगा, तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है. बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग विल कम इन द लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है. तो वैसे ही मैं अगर यहाँ पे एक क्लास सिलेक्टर यूज करता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, एक क्लास सिलेक्टर यूज करता हूँ, बट मैं वो क्लास सिलेक्टर कहाँ पे, एक एक्सटर्नल फाइल पे यूज कर रहा हूँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल सीएसएस. तो एक्सटर्नल सीएसएस में देख सकते हो आप लोग, हेडिंग वन यूज किया है, उसका मैंने एक्सटर्नल सेंटर दिया है. इसको भी मैं बहुत कुछ कलर दे सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ. सोचिए, रेड. will it sound good, will it look good, I don't know, let's see. Yeah, okay, fine. It's okay, okay, like it's not a professional, but like you can see the changes, right? So like this I can have a class selector with internal, external, and also inline. Like I can no, like for inline is not possible obviously, because you are using some class selector, so you can do that by internal and external. और मैंने पहले ही बोला है, I have told you several times that in professional like the professional methods that is being used is the external one only, because there will be thousands of lines in the HTML file, and there will be thousand lines of code for the CSS. So every time it's not possible to execute the, like to make some changes. If you are giving some errors, if you are giving some debug, it's not possible to change, to go to that line in HTML and see. What you will do is simply go to the CSS file and make some changes and see the output. So I've shown you by using the internal CSS, by external CSS for the concept एक class selector. तो आप लोग को शायद क्लियर हो गया कैसे हम लोग class selector यूज कर रहे हैं, इंटरनल CSS यूज करके, इंटरनल CSS कंसेप्ट यूज करके, एक्सटर्नल CSS यूज करके. यहाँ पे मैंने p tag यूज किया है एक पैराग्राफ के लिए, इंटरनल CSS यूज किया हूँ, और यहाँ पे मैंने टैग यूज किया हूँ CSS यूज करके. Fine, I guess I cleared all your doubts. If you have any doubts, don't forget to comment in this video, and please, I'm requesting all my viewers, please subscribe to my channel. I guess it's helping you out. If you need to give some suggestions, you're always welcome. Thank you. Take care. Bye.